In the previous lecture, we have introduced a topic that is damped free vibration. In previous lecture, we have seen that in case of damped free vibration, amplitude of the vibratory system decreases with respect to the time, and it gets eliminated and gets zero after certain time. We have seen that we are very much interested in this topic to calculate two things. One is the rate of decay, means the rate at which the amplitude is decreasing, and number two is the damped frequency. We have seen in previous lecture that we are supposed to study four types of damper. Right now we are studying viscous damping. So it is a case of the damped free vibration where we are using a damper, that is viscous damping. So we have taken a very simple example in which there is a mass, there is a spring, and there is a damper attached. As we know that in case of damped free vibration, these three things are essential. Okay, there will be no force, only there will be initial disturbance. Okay, means we will assume that there is a no force. So this is a system. Okay, we assume that this system is in equilibrium position or the mean position. So what is the meaning of equilibrium position or the mean position? जैसा हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में जब रहता है तो उसकी जो पोजीशन है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन. ओके, या बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम डिस्टर्ब करें और वापस वो जिस आफ्टर वाइब्रेशन जिस पोजीशन पे आके वो रुकेगा, वो पोजीशन उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगी. So now in this case, what we have done, we have given initial disturbance. So we have disturbed this mass. हम यहाँ पास इसको लेके आ रहे हैं इस पॉइंट पर और इसको हम छोड़ रहे हैं. Okay, so we have given the initial disturbance or the initial displacement, that is the x. Okay, so this time the spring is this mass spring damper system is looking like this. Okay, so this is making the velocity. We are assuming that this is going downward. So this is making velocity downward and displacement downward and acceleration downward. So now we can have the differential equation of this condition of this vibratory system. For that we need a method, and we are going to use the Newton's second law of motion. So from Newton's second law of motion, we know that for a linear system, okay, m double x dot means the inertia force is equal to summation of all the forces, okay, in x direction. Means if it is having in the x direction, okay, means force is applying force, the direction of force is in the x direction, so we will take it positive, and if it is opposite to x direction, then we will take it negative. Fine. So just we are going to make the free body diagram of this system. So as we know that this mass is moving downward, so when this mass will go downward, in that condition a spring will try to oppose this motion, and that's why a spring will apply a force which will act opposite to the motion. So a spring force will be like this. Fine. And similarly damper will also try to resist the motion. That is why damping force also will apply in the opposite direction. And as we know that the spring force, Fs means spring force, is nothing but the stiffness of the spring and the displacement, and the damping force Fd is nothing but the damping coefficient C and the velocity of the system. So in case we can write here Kx, that is the spring force which is acting opposite to the motion, and the damping force, that is the Cx dot, which is also acting in the opposite direction. Okay, and in this direction there is a motion. If we want to represent the mx double dot, if we want, then we can obviously we have to show in this way. So inertia force is just opposite to the motion, so we can say that it is the inertia force. Fine. So now mx double dot is equal to, now we have to take all the forces. So one is the kx, which is opposite, so we will write minus kx, and cx dot, that is the damping force, it is also opposite, acting in opposite direction, so we will write the minus cx dot. So this equation can be written as mx double dot
plus Cx dot plus Kx is equal to 0. Okay, and this equation is known as the fundamental differential equation of motion for a single degree of freedom system, okay, having damped free vibration, having damped free vibration. Okay, fine. So now we are going to solve this equation, this differential equation. So for that we can assume a solution of x equal to, we can assume a solution. Assuming a solution, we are trying to make the auxiliary equation out of this equation. You can give the number of this equation. This is the number 1. So assuming that x is equal to e to the power st, so we can write that dx divided by dt, or we can write it x dot would be s e to the power st, and dx square second order differential is equal to, it can be written as in the form of x double dot, and it would be, again we have to differentiate it. So s will come from here, that is a constant, e to the power st. So we can write s square e to the power st. So we can write the equation, the value of x dx by dt means x dot and x double dot in this equation first. So we will have this equation like m, at the place of x double dot we can write s square e to the power st plus c, at the place of x dot we can write s e to the power st, and plus k, at the place of x we can write e to the power st is equal to 0. As we can see that e to the power st is common, so we will take common e to the power st. So we will have the equation ms square plus cs plus k and equal to 0. So ultimately we will achieve a equation that is ms square plus cs plus k equal to 0. Okay, fine. So this is the auxiliary equation. Okay, so this is the auxiliary equation, and here s which we have taken, this is the root. Okay, so these are the roots. It may be if there are more than one root, so it may be s1 s2. Okay, fine. So as we know that it is now the characteristics equation of this system, and it is a quadratic equation. You can see that it is a quadratic equation. So auxiliary equation जब भी हम निकालते हैं तो quadratic equation के फॉर्म में उसको बदल के फिर उसको सॉल्व करते हैं. तो I can write that it is a characteristics equation, okay, of the system, and it is a quadratic equation, equation. Fine. So if we want to solve this equation, okay, how can we solve? How can we determine the value of s? As we know that in the case of quadratic equation, we can determine the value of s is equal to, in the form, as we know the formula, minus b plus minus root under b square minus 4ac upon 2a. Okay, so here a is equal to, formula is, we have calculated, you have seen, minus b plus minus root under b square minus 4ac upon 2a. So here a is equal to m, b is equal to c, and c is equal to k. Okay, so this is a, this is b, and this is c. Now we can put the value of a, b, c, and we can determine the value of x. So we will have equation is equal to s. At the place of b we can write, that is minus b, we can write minus c plus minus root under. At the place of b square we can write c square minus 4. Okay, at the place of a, that is m, and 4ac, and for at the place of c, that is k.
divided by 2a. So at the place of a we can write 2m, 2m. So this is the you have calculated the roots in this way. आपने इससे पहले भी रूट्स को निकाले होंगे. ऑक्सिलरी इक्वेशन, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऑक्सिलरी इक्वेशंस में बदल लेते हैं जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से हम रूट निकालते हैं. फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a की मदद से. ठीक है, तो हमने यहां भी वैसा ही किया है. अब यहां आप देख सकते हैं कि ये जो एक्चुअल है यहां बस दो रूट है. अगर हम एक बार प्लस साइन लेंगे तो एक अलग रूट निकलेगा, माइनस साइन लेंगे तो अलग रूट होगा. सो वी कैन से दैट देयर आर टू रूट्स. सो s1 एंड s2, these are the two roots, and we can write minus c plus minus root under c square minus 4mk divided by 2m. Now we can solve these roots, so we can write minus c by 2m. अगर इसको हम इससे अलग अलग डिवाइड कर दें, प्लस माइनस, if we will take 2m into the bracket, so it will be 2m square. So ये हो जाएगा c square minus 4mk divided by 2m whole square. So S12 is equal to minus c by 2m plus minus root under c square. It can be written as c square divided by 2m whole square, and minus 4mk divided by 2m whole square can be written as 2 2s are 4m square. So it is equivalent to S12 minus c by 2m plus minus root under, it can be written as c by 2m whole square minus 1m to 1m cancel and 4 to 4 cancel, so it would be k by m. So this is the actually the root. Okay, now we may have from this root we may have the general solution of the differential equation. So we may have the general solution, we may have the general solution of differential equation. और हमको पता है कि जनरल सॉल्यूशन हम कैसे निकालते थे, याद करें. x इज इक्वल टू, जिसके फॉर्म में जैसे यहाँ पास क्या लिखा हुआ था, mx स्क्वायर प्लस सी एक्स डॉट प्लस एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के इक्वल टू 0 के फॉर्म में था. तो x का ही जो है वो सॉल्यूशन होगा. ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लिखते क्या थे, c e टू द पावर s1t प्लस c2 e टू द पावर s2t. अब यहाँ रूट कुछ और भी हम लेते थे, हो सकता है हम a और b लेते थे तो हम लिखते थे x इज इक्वल टू c1 e टू द पावर a1t या at प्लस c2 e टू द पावर bt. तो ये जो है आपका क्या है, इट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. अब इसमें जो है अगर मुझे ये सॉल्यूशन निकालना है, सो इन दैट कंडीशन आई हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ c1 एंड c2 विच आर कॉन्स्टेंट. हियर c1 एंड c2 आर two arbitrary constant, two arbitrary constant. So to give the solution of this equation, what equation, mx double dot plus cx dot plus k equal to 0, उसके सॉल्यूशन को देने के लिए, जिसका सॉल्यूशन क्या निकला है, x इज इक्वल टू c1 e टू द पावर s1t प्लस c2 e टू द पावर s2t. इसके लिए मुझे जो है ये कांस्टेंट जो है c1 और c2 उसको निकालने पड़ेंगे. जब मैं ये कांस्टेंट निकाल लूंगा तब जाके मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन में निकाल सकता हूँ. अब आपने जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा कि ये जो c1 और ये जो c2 है ये कैसे निकाला जाता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. c1 एंड c2 कैन बी डिटरमाइंड विथ द हेल्प ऑफ इनिशियल कंडीशन, विथ द हेल्प ऑफ इनिशियल कंडीशन. मतलब इनिशियल कंडीशंस में जैसे मतलब किसी एक पॉइंट पे हम मान लेते हैं कि सपोज ये इनिशियल कंडीशन है. अब इसके इनिशियल कंडीशंस को लेते हुए हम क्या कर सकते हैं, इस जनरल सॉल्यूशन को, इस जनरल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन को हम कंप्लीट सॉल्यूशन दे सकते हैं. मीन्स हम जो है c1 और c2 की जो वैल्यू है हम उसको निकाल सकते हैं. तो मैं अभी जो है ये बोल रहा हूं कि ये जो इक्वेशन है ये है इक्वेशन नंबर 2. तो मैंने जो रूट निकाले, जो सॉल्यूशन निकाला जनरल सॉल्यूशन, वो क्या है, x इज इक्वल टू c1 e टू द पावर s1t प्लस c टू द पावर e s2t. आप सभी जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सब जो है इसको नोट भी करते चलें, क्योंकि मैं फिर बीच में अगर बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2
तो आपको वीडियो वापस से करना पड़ेगा, इसलिए अच्छा है कि आप कॉपी में नोट करते चलें तो आपको आसानी होगी। सो हमने अभी देखा कि ये जो है आपका जनरल सॉल्यूशन है और इसके लिए हमको जो है C1 और C2 जो है इसका कांस्टेंट, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू निकाल के हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन दे सकते हैं। और यहाँ S1 और S2 जो है ये रूट है, और S1 और S2 का जो हमने वैल्यू जो अभी निकाला था वो क्या निकाला था, वो हमने निकाला था -C/2m प्लस माइनस रूट अंडर C/2m होल स्क्वायर माइनस K/m, ये हमने सॉल्यूशन निकाला था। अब हम जो है एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू टर्म एंड दिस इज द क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट। क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट, क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट, critical damping coefficient. Okay, so what is critical damping coefficient? So it is the value of damping coefficient C that makes the expression within the radical sign 0 and it gives two equal roots of S. क्या समझा हमने कि अगर ये जो हमारा रूट का जो सॉल्यूशन, ये जो रूट निकला है S1 और S2, इसमें जो रेडिकल साइन के अंदर है, रेडिकल साइन मीन्स रूट के अंदर, ये जो रूट के अंदर है, अगर ये वैल्यू जो है अगर ये 0 हो जाती है या वैनिश हो जाती है, इन दैट कंडीशन द वैल्यू ऑफ C विल बी द क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट। ये समझ में आ रहा है? मतलब इसी वैल्यू को हम क्या बोल देंगे, CC। कब बोल देंगे? जब रेडिकल साइन के अंदर का ये वैल्यू जो है वो कितना हो जाए, 0 हो जाए। सो फॉर दिस वी कैन राइट दैट C/2m होल स्क्वायर माइनस K/m इज इक्वल टू 0। सो इन दिस कंडीशन द C वुड बी CC। आप समझ पा रहे हैं? मीन्स रेडिकल साइन के अंदर का अगर जो भी वैल्यू है, अगर ये 0 हो जाए, वैनिश हो जाए, इन दैट कंडीशन, उस कंडीशन में C ही जो है वो क्या हो जाता है, क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट CC हो जाता है। तो अगर मैंने इसको 0 कर दिया है तो C को मैं क्या लिख सकता हूँ, CC लिख सकता हूँ। तो CC/2m होल स्क्वायर माइनस K/m इज इक्वल टू 0। सो इफ आई सॉल्व दिस इक्वेशन इन दैट कंडीशन द कैन राइट CC/2m इज इक्वल टू K/m and this square when it will come this side, so it will make root. So we can write CC/2m and we know that root K/m is the natural frequency omega n. ये हमको सबसे पहले पता है। ये किसके केस में निकलता था? एक स्प्रिंग और एक मास के केस में निकलता था, ठीक है। रूट अंडर K/m is equal to omega n. So we can write CC/2m is equal to root under K/m is what? Omega n. So we can write CC is equal to 2m into omega n. So this is the value of the your critical damping coefficient. ये critical damping coefficient की आपकी जो है वैल्यू है। अब यहां से हम क्या देख सकते हैं? हम यहां से देख सकते हैं कि जो आपका क्रिटिकल डैम्पिंग जो कोफिशिएंट है वो आपका डिपेंड किस पे कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है आपका मास पे, ओके, और ओमेगा एन पे। अब ओमेगा एन क्या है? K और M इसमें आ रहे हैं। इसका मतलब अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट जो है इट डिपेंड्स अपॉन द मास एंड द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब इसको हम जो है इक्वेशन नंबर बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। फाइन। नाउ वी विल अगेन इंट्रोड्यूस अ न्यू टर्म दैट इज द डैम्पिंग फैक्टर। And what is the damping factor? Damping factor is defined as the ratio of damping coefficient to the critical damping coefficient. ठीक है। अब damping coefficient क्या है? C। critical damping coefficient क्या है? CC। तो अगर इन दोनों के रेशियो को अगर हम निकालें, मीन्स C/CC अगर हम कर दें, डैम्पिंग कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट अगर हम कर दें, तो इसी को हम बोलते हैं क्या? डैम्पिंग फैक्टर, एंड दैट इज डिनोटेड बाय द जीटा। दिस इज द साइन ऑफ जीटा। फाइन। तो हम कह सकते हैं कि डैम्पिंग फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द डैम्पिंग कोफिशिएंट टू द डैम्पिंग क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट। C क्या है आपका? C है डैम्पिंग कोफिशिएंट। C is the damping coefficient और CC है, CC is the critical damping coefficient. critical damping
critical damping coefficient. Fine. And what is the damping factor? Damping factor is the ratio of the damping coefficient C to the critical damping coefficient, that is the CC. Damping factor is also known as the damping ratio. ठीक है, तो हम चाहे इसको damping factor बोल दें या फिर मैं जो है इसको क्या बोल दूं, damping ratio बोल दूं, ये एक ही बात है. Fine. Now C by 2m, if I write C by 2m, so I can write it, C by 2m को हम ऐसा लिख सकते हैं, C by CC into CC by 2m, means multiplying CC in this equation and dividing CC this equation. Okay, तो हम क्या देख सकते हैं, that C by CC, okay, is the zeta, so we can write at the place of C by CC the zeta, and the CC by 2m is what? So CC by 2m is the omega n. Fine. So we can write here the omega n. So in this condition we can write that C by 2m is equal to zeta into omega n. Now this is your equation number 5th. These are the very important terms. Okay, this is the equation number 4, and this is the 5th. So these equation number 3rd, 4th and 5th, it is very important and it will help you to solve the numerical. So we have derived the result, that is the CC by 2m is equal to zeta into omega n, and this is the equation number 5. And we know that the roots are minus C by 2m plus minus C by 2m whole square, okay, and minus K by m. So in the place of C by 2m we can write the zeta into omega n from the equation number 5, and at the place of K by m we can write the omega n square, since we know that omega n is equal to root under K by m, so K by m is equal to omega n square. So if you want to solve this roots, so S12 minus C by 2m can be written as minus zeta into omega n plus minus root under C by 2m is the zeta omega n whole square, and minus K by m can be written as the omega n square. Fine. So we can take common minus zeta omega n plus minus, we can take common omega n square from both the terms. So when it will come out omega n square, so it will be omega n, root के बाहर अगर आएगा तो omega n square omega n हो जाएगा, and in the root there will be zeta square minus 1. So taking omega n common from this whole equation, therefore zeta minus zeta plus minus root under zeta square minus 1 into omega. Okay, so what we have seen that we have converted our S1 and S2, means the roots of the equation, in the form of the damping factor or the damping ratio, that is the zeta. And we know that what is zeta and omega n, and we know that what is zeta, with zeta is the ratio of the damping coefficient to the critical damping coefficient, means C by Cc. Now the condition very important in the vibration. If you can see from these roots, if I will change the value of zeta, okay, so the nature of the root will also change. It means if I will take the value of zeta equal to 0, so roots will be different. If I will take the zeta is equal to, greater than 1, it will be different. If it is less than 1, it will be different. So there may be 3 cases, means the zeta, when the zeta is equal to 1, when the zeta is greater than 1, and when the zeta is less than 1. Okay, so if the zeta is greater than 1, it means we can say that C by Cc is greater than 1, or we can say that C is greater than Cc. So it is known as the over damping. Fine. If value of zeta is equal to 1,
In that condition we can write the C by Cc is equal to 1. So we can write the C is equal to Cc, and it is known as the critical damping. Critical damping. It is known as the critical damping. Fine. And if the zeta is less than 1, in this condition C by Cc is less than 1 or C is less than Cc. So we can write that it is a under damping. Okay, under damping. It is a under damping. So if the value of zeta is greater than 1, it is over damping. If the value of zeta is equal to 1, it is a critical damping, and if the value of zeta is less than 1, it is the under damping. Now you can see, if the value of zeta is greater than 1, if it is greater than 1, in that condition the roots will be real and unequal. So it's if the zeta okay is greater than 1, in that condition roots would be the real but unequal. Real and unequal. And if the zeta is equal to 1, so roots will be real and equal. And if the value of zeta is less than 1, in this condition roots will be imaginary. Roots will be imaginary. Fine. So in the next class we will see more about about these conditions, for the over damping, for the critical damping, and for the under damping. As of now, you have to remember, like, if the zeta is greater than 1, in that condition the case is the over damping. If the zeta is equal to 1, the case is the critical damping, and the zeta is less than 1, it is a case of under damping. ओवर डैम्पिंग के केस में जो रूट्स आते हैं वो कैसे होते हैं, रियल अनइक्वल होते हैं. क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में जो मीन्स जीटा इक्वल टू 1 के केस में जो रूट्स आते हैं वो रियल और इक्वल होते हैं, और लेस देन 1 के केस में जो रूट्स आते हैं वो इमेजिनरी होते हैं. ये कैसे रियल और इक्वल होते हैं या फिर इमेजिनरी होते हैं, दैट वी विल सी इन द कमिंग क्लास.